Hello everyone, welcome to the practical training of business taxation. My name is Nimesh and I am going to teach you the business taxation. So before we go deep into the business taxation, there are few concepts that we should know and there are few questions that we need the answers. So what is tax? So basically कोई भी गवर्नमेंट होती है, इधर इंडियन गवर्नमेंट होती है या फिर यूएस गवर्नमेंट होती है, सो उनको कंट्री या फिर स्टेट रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, so to meet those requirements they need certain source of income. So that source of income is the tax. So government collects the tax and then they provide the public facilities and infrastructure, right? So tax is nothing but the compulsory payment made to the government, right? So that government use that income to provide the facilities to the public. Uh, in India, we have different types of taxes like GST and income taxes. So similarly, in the USA, there are certain type of taxes, right? So who collects it? So from the perspective of USA, in USA there are two bodies who collects the tax. One is federal government and other is state government. Federal means the state central government. So federal government has a different tax laws and state government has the different tax laws, right? So on behalf of federal government, there is a one body known as a internal revenue service, which shows and oversees the rules and regulations of the federal government and their taxation. So in the USA, mainly for the federal government, Internal Revenue Service is the body which will collect the tax, and state has their own different uh, bodies to collect the taxes. In the USA, there are two type of taxation. One is individual taxation, and other is business taxation. So whatever the income earned by the individual person will pay the tax, and business will pay the taxes on its own income. Next is separate legal entity. Separate legal entity is the like concept in which we know that business and the owner of the business are two different persons or two different individuals. So if we can say that in the eye of law, business is the separate person and owner of the business is the separate person. Both have separate responsibilities, right? So company is treated as a person in the eyes of law, independent from the people who run or invest in it. So why there is a concept of separate legal entity? सो क्या होता था कि जब भी बिजनेस की कोई भी लायबिलिटीज होती थी, लाइक बिजनेस टुक सम लोन्स एंड लायबिलिटीज एंड देन इट कुड नॉट फुलफिल, सो उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो भी ऑनर होता था बिजनेस का, उसकी जो भी पर्सनल असेट्स होती थी, जैसे कि उसकी उसका घर, उसकी गाड़ी, वो सब भी बेच के उसकी जो भी पैसे आते थे वो बिजनेस की लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए यूज करते थे. सो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब कि बिजनेस की जो भी लायबिलिटी होगी उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि उसका ऑनर या शेयर होल्डर. Clear. Next is double taxation versus pass through. So in the USA, we have the two concepts for the taxation. One is double taxation, and other is pass through. So कोई बोले कि सर डबल टैक्सेशन क्यों होता है? तो there are certain types of entities which has the laws that they have to pay the tax directly to the government. जैसे कि सी कॉरपोरेशंस की बात करें तो सी कॉरपोरेशन में रूल है कि वॉट एवर द इनकम अर्नेड बाय द सी कॉरपोरेशन विल बी टैक्स्ड फ्लैट 20%. मतलब जो भी इनकम सी कॉरपोरेशन की कंपनी अर्न करेगी वो फ्लैट 21% टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, राइट? After paying the tax, whatever the income is there is going to deliver to the shareholder in the form of dividend, right? It will be distributed to the shareholders in the form of dividends, right?
So whatever the income earned by the individual in form of dividend, they are also going to report that income on their own tax return, which is a 1040 tax return. So they are also going to pay the tax on that amount. So this is how the C corporations end up with paying the double taxes. One is paying on itself and other is paid by the shareholder itself. So this is how the income is going to be taxed twice, and other is a pass-through entity. So there are certain types of entities which has the pass-through entities. What is the meaning of pass-through entity? Pass-through entity does not pay tax itself. So whatever the income earned by the business, so business will not pay the tax. All the income will go to the individual person who is the owner or shareholder of the business, and he is going to pay the tax. So this is how we can like say that business is not going to pay the tax, but the owner is going to pay the tax. So these are the two concepts that you should know about before practically working in the US industry, right? Next is types of entities. So why these types of entities? Why like this much are the types are there? So thing is that all these types of entities have different type of tax rules and regulations, right? So we have got the sole proprietorship. Then there is a corporation. Corporation has two different types. One is S corporation and other is a C corporation. Then we got the partnership. Partnership have three different types: general partnership, limited partnership, limited liability partnership. Then we have the limited liability company, and last but the not least, the single member LLC. So all these kinds of entities are there like formed in the USA, and all these entities has a different types of rules and regulations. ओके सो लाइक कोई बोले कि सर इतनी सारी टाइप्स क्यों है एंटिटीज के, तो कोई लोग होते हैं जिनको लाइक टैक्स से करने का इंटरेस्ट होता है, कोई लोग होते हैं जिसको बड़े इन्वेस्टर्स चाहिए. सो ऑल दोज पर्पज आर सर्व थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज. अगर स्मॉल बिजनेस है और कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए तो उसके लिए कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज होती है जिसके अंदर लेस लाइक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? एंड इफ यू वांट टू लाइक गो बिगर, then there are certain types of entities which has a complex structures as well. So based on the purpose of the people, there are several types of entities. Now we are going to learn each and every entity in deep. So first is sole proprietorship. What is a sole proprietorship? Sole proprietorship is the most common form of business entity. जो भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, राइट, जिसको लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना है, सो दे फॉर्म द सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है. जो भी बिजनेस कोई इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट करता है और वो अगर चूज करता है कि उसको कोई और अदर एंटिटी टाइप्स में नहीं जाना है, लाइक उसको ना कॉरपोरेशन बनाना है, ना पार्टनरशिप, ना और कोई टाइप्स में नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, जो भी इनकम होगी वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही रखेगा. So sole proprietorship is, we can say that it is one of the easiest form of entities. अभी sole proprietorship में one rule is that there should be only one owner. So if there is a single person who is owning the business organization, then it is a sole proprietorship. It is not a separate legal entity. So whatever the risk, whatever the liabilities, income, debts, losses, all are going to like of the owner itself. So it is not a different. So business and the owner are not a different thing in the sole proprietorship. अच्छा, जो भी इनकम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर अर्न होगी वो सारी कहाँ पे रिपोर्ट होगी? तो whatever the income earned by the sole proprietorship are going to be reported on individual tax returns. So for example, there is a one person like Steve is the person who is doing the freelancing business, right? So whatever the income earned by the Steve,
is going to be taxed on his own tax return, which is 1040. अच्छा 1040 के लिए we have the separate course which you can refer, so that you can learn deep about the how the income is reported in the schedule C, right? So for in let back to the our example, Steve is the person who is doing this freelancing business, and he don't want to go deeper into legal structures and all the rules and regulations. So he will not form any type of entity. He will just like do his freelancing business, and whatever the income, whatever the expenses are there, he will just report on Schedule C of 1040. So this is how it is taxed unlimited liability. So what is unlimited liability? So whatever the liabilities of the business are going to be liability of the owner itself. So for example, in our example, we take that Steve is doing the freelancing business. अब अगर बिजनेस के अंदर जो भी उसने लोन्स लिए है या फिर कोई भी और ऐसी लायबिलिटीज है जो उसका बिजनेस नहीं पे कर सकता, तो वो पे करने के लिए स्टीव की ऑल दी जितनी भी असेट्स होगी वो सारी रिस्क पे आ जाएगी। उसकी असेट्स को बेच के उसकी जो भी लायबिलिटीज होगी वो फुलफिल करी जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द drawback of the sole proprietorship, that there is no unlimited liability, right? Next is business cannot be transferred. It's if sold, the owner need to report as if sale of asset. मतलब क्या है इसका? तो जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल स्टीव, हमारे एग्जांपल में स्टीव है, उसने जो भी खुद का बिजनेस बनाया था फ्रीलांसिंग का, अगर उसको वो बिजनेस सेल करना है तो वो नहीं कर सकता। अगर करना ही है तो उसको एज एन असेट सेल करना पड़ेगा। सो वो जो भी उसकी असेट्स होगी वो सारी सेल होगी, उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा वो सारा रिपोर्ट होगा। सो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज नथिंग बट द ऑनर इटसेल्फ इन द बिजनेस, बोथ आर द सेम थिंग, राइट? नेक्स्ट वी गॉट द सी कॉर्पोरेशन। तो हमने अभी देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बिजनेस की जो भी लायबिलिटी थी वो सारी बेयर किसको करनी पड़ती थी, तो क्या भाई इंडिविजुअल ओनर को करनी पड़ती थी। सो उसको मिटिगेट करने के लिए देयर इज कॉर्पोरेशंस, राइट? कॉर्पोरेशंस का फॉर्म ही इसीलिए हुआ है ताकि जो भी ऑनर हो उनकी जो भी पर्सनल असेट्स हो दैट कैन बी सेव फ्रॉम द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। So C corporation refers to a business structure where shareholders have separate legal status, which lets them safeguard their personal assets in the venture. So C corporation में क्या होता है कि C corporation में शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं और जो भी बिजनेस होता है वो दोनों सेपरेट होते हैं इन द आई ऑफ लॉ। सो वॉट एवर द लायबिलिटीज, वॉट एवर द like risk of the corporations are going to be in the corporation, it is not going to the personal assets of the owner or shareholder, right? Regular corporations are referred to as a C corporation, means जो भी बिजनेस फॉर्म होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सी कॉर्पोरेशन, अनलेस if the business owner wants it to be taxed in any other way, like they can elect to be in a S corporation or partnership। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर दो से ज्यादा, अगर कोई भी बिजनेस फॉर्म हुआ उसके अंदर दो से ज्यादा अगर मेंबर है, दो और दो से ज्यादा, then it is by default going to be a partnership, otherwise it is by default a C corporation। So regular corporations are referred to as a C corporation। Again, next is double taxation. So as I explained earlier that there is a concept of double taxation. How? So whatever the income earned by the C corporations, so as per the law of IRS, Internal Revenue Services, whatever the income earned by the C corporation are going to be taxed at the flat 21%। सो व्हाट इट मीन्स, लाइक अगर कोई सी कॉर्पोरेशन है और उसने 1 लाख का प्रॉफिट किया, सो वो 1 लाख पे उसको फ्लैट आफ्टर डिडक्शंस
फ्लोट जो भी आएगा उसके ऊपर उसको 21% टैक्स भरना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर सी कॉरपोरेशन है और उसने 1 लाख का प्रॉफिट किया, सो 1 लाख के ऊपर वो फ्लैट 21% मतलब 21,000 टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, राइट। अभी वो जो भी इनकम होगी आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, जो भी इनकम होगी वो शेयर होल्डर्स को जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। Now, shareholders are also going to pay the tax on that dividend. They are going to report that dividend income on their 1040 tax return. So C corporation का ये ड्रॉबैक है कि उनको दो बार टैक्स भरना पड़ता है, वन ऑन एंटिटी लेवल एंड अदर इज ऑन इंडिविजुअल लेवल, राइट। नेक्स्ट इज नो restriction on types and number of the shareholder. So I am going to explain you in upcoming sessions that are like different entities has the different types of legal structure and legal laws, right, of the taxation. So फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटिटीज होती है जिसके अंदर रूल्स होते हैं कि भाई दीज आर द टाइप्स ऑफ पीपल हु कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट इन दी सी कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन में देर इज नो स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है तो उसके अंदर रूल होता है कि भाई टू या टू से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए। सो उसी तरीके से यूएस में भी होते हैं। सो सी कॉर्पोरेशन इज सिमिलर टू दी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द इंडिया। मीन्स कि जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर there can be a thousands of shareholder. There is a no limit on the number of shareholder, right? So C corporations has a no restriction on any types of members or number of the shareholder. Next, files separate returns from its owner since it is a separate legal entity. So it has to pay the tax on itself and it has to file a separate tax return, right? So C corporation uses Form 1120, which is used to report the income and pay the tax. We are going to learn deep about the Form 1120 and we are going to practically show how the Form 1120 is going to be prepared, how the work papers are going to be prepared. Okay, so don't worry about that. Tax return is due on 15th of 4 month following the end of the tax year. मतलब कि जो भी इनकम अर्न करता है सी कॉरपोरेशन, फॉर एग्जांपल 2024 की जो भी इनकम होगी वो 2025 के 15th ऑफ फोर्थ मंथ मतलब 2025 के अप्रैल के 15th को ड्यू होगी, मतलब तब तक टैक्स पे करना पड़ेगा। सो वॉट एवर दी C corporation earns, it has to be taxed by the 15th of 4 month of the following the end of the tax year. As per my example, like 2024 की जो भी इनकम होगी, सो उसकी जो जो भी इनकम होगी वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 के अप्रैल मंथ के 15 तक कर देनी पड़ेगी, राइट। Next is Form 118832 is used to classify the any other type of entity as a C corporations. Okay, so जब आपने like बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर दी, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टार्टिंग में ही एज कॉर्पोरेशन बना दिया, अभी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग उसको अगर चेंज करना हो कि नहीं भाई मुझे तो सी कॉर्पोरेशन में जाना है अभी, तो वो कैसे जा सकता है? तो वो जा सकता है बाय फाइलिंग द फॉर्म 8832। फॉर्म 8832 इज द नॉन एज अ लाइक इलेक्शन ऑफ एंटिटी। सो अगर आपको सी कॉर्पोरेशन बनाना है फ्रॉम द एस कॉर्पोरेशन और 1065 और एनी अदर टाइप ऑफ एंटिटी, अगर आपको सी कॉर्पोरेशन में आना है तो उसके लिए आपको फ्रॉम फॉर्म 8832 भरना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज एनी newly formed entity which has not made any election is by default a C corporation if only one member. So as I explained earlier कि अगर there are two or more members then it is by default a partnership.
if it is not as corporation. But if there is only one member and it is not any other type of entity, then it is by default a C corporation. So whatever the जब भी आप यूएसए के अंदर कोई भी एंटिटी फॉर्म करोगे, अगर वो पार्टनरशिप या एस कॉर्प नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, सी कॉर्पोरेशन. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ सी कॉर्पोरेशन. सी कॉर्पोरेशन फिर से समराइज कर देता हूँ कि सी कॉर्पोरेशन एक ऐसा एंटिटी टाइप है जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं, जितने भी चाहो उतने. कोई भी like type of entity can be a partner in the shareholder in the C corporation, and it has to pay tax twice. One is 21% flat on its own income, then on the dividend income itself also. So this was a C corporation. Next we have the S corporation. So it has to be incorporated domestically. मतलब सी कॉर्पोरेशन में क्या था कि कोई भी पर्सन उसका शेयर होल्डर बन सकता था. लाइक अगर इंडिया से भी कोई पर्सन है तो वो भी शेयर होल्डर बन सकता है सी कॉर्पोरेशन का, बट नॉट इन द केस ऑफ एस कॉर्पोरेशन. एस कॉर्पोरेशन हैज टू बी लाइक इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिकली, मतलब विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब कि अगर उसके शेयर होल्डर्स भी है तो वो भी यूएस के सिटीजन होने चाहिए. एंटिटी अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वो भी यूएस के ही बाउंड्री के अंदर ही करनी पड़ेगी. सो इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिकली. इट मस्ट हैव ओनली वन क्लास ऑफ स्टॉक. मतलब अगर स्टॉक्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सो एसकॉप could only have the one class of stocks. It cannot have different class of stocks. There cannot be more than 100 shareholders. जैसे सी कॉर्पोरेशन में हमने देखा कि we can increase to maximum number that we want, right? But not in the case of S corporation. S corporations में maximum 100 shareholders ही हो सकते हैं. Okay. Shareholder must be a US citizen. Yeah. And partnership corporations and non-resident aliens cannot qualify as a eligible shareholders. So उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एस कॉर्पोरेशन है और एस कॉर्पोरेशन के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ एंटिटीज या कुछ टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो हु कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर. सो उसमें क्या क्या आता है, तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द एस कॉर्पोरेशन. C corporation cannot be a shareholder of S corporation or non-resident alien. What is non-resident alien? So those who are not resident of the United States. So these are the people who cannot qualify as a eligible shareholders. Okay. So फिर से समराइज कर देता हूँ कि एस कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो वो होता है एक डोमेस्टिक एंटिटी होती है. ओके. उसके पास जस्ट वन क्लास ऑफ स्टॉक्स होते हैं. उसके अंदर 100 से कम शेयर होल्डर्स होने चाहिए. वो भी कौन से, तो यूएस सिटीजन ही होने चाहिए. ओके. अभी अगर कोई सी कॉर्पोरेशन है और अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, अभी वो चाहता है कि उनको एस कॉर्पोरेशन बनना है, तो वो कैसे बन सकता है. So for that, they need to file Form 2553. Election by small corporation is used to elect any entity to be taxed as a S corporation. So similarly, in the C corporation, we had to use the 83 to elect the entity type as a C corporation. Similarly, in the S corporation, we have the 2553. So 2553 से क्या हो सकता है, तो 2553 से we can turn the any other type of entity into the S corporation. Okay. Form 1120S is used to report the income. Okay. So whatever the income earned by the S corporation, it has to be reported on the form 1120S. Okay. And this form is going to be filed in the IRS. Okay. And IRS will assess the further requirements. Income is not directly taxed. It passed through income to the shareholder using the schedule K1 and shareholder is taxed. इसका क्या मतलब होता है,
तो जो भी इनकम एस कॉर्पोरेशन अर्न करेगा, एस खुद ही कोई टैक्स पे नहीं करेगा। जैसे कि वी सॉ इन दी सी कॉर्पोरेशन दैट इज हैज टू पे 21% फ्लैट टैक्सेस, राइट? But in the case of S corporation, there is no like tax rate on the S corporation itself. Whatever the income earned by the S corporations are going to uh, distributed to the shareholders, and shareholder will report the income. अच्छा, कौन सा फॉर्म होता है जिससे भी इनकम जो भी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो वो होता है K1। तो K1 के अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव द फोर पार्टनर्स ए बी सी डी, ऑल आर 20-25% शेयर होल्डर्स इन द ए बी सी डी कॉर्पोरेशन। नाउ अगर ए बी सी डी कॉर्पोरेशन ने 1 लाख प्रॉफिट किया, तो फॉर एग्जांपल ए होगा, तो ए शेयर होल्डर को 25% के हिसाब से 25,000 रुपीज मिलेंगे। तो वो जो शेयर होगा 25,000 का, वो कहाँ पे रिपोर्ट होगा? तो वो होगा स्केड्यूल K1 पे। स्केड्यूल K1 में से जो भी शेयर होगा वो जाएगा इंडिविजुअल टैक्सेशन में। जो भी हम 1040 रिटर्न बनाएंगे, 1040 में हम स्केड्यूल K1 को रिपोर्ट करेंगे, और उसकी जो भी इनकम होगी लाइक 25,000 जो भी ए का था पोर्शन, सो उस पे ए पे टैक्स करेगा। बी का जो भी पोर्शन होगा 25,000, उस पे बी टैक्स पे करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्स। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एस कॉर्पोरेशन, that it has not to pay the tax directly. All the income earned by the S corporation are going to pass through, मतलब उसकी जो भी इनकम होगी वो पास थ्रू कर दी जाएगी किसको? तो शेयर होल्डर को। अच्छा, कब पे करना पड़ेगा टैक्स? तो 15th डे ऑफ थर्ड मंथ ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। मतलब कि फॉर एग्जांपल 2024 का जो भी इनकम थी, वो उसके ऊपर टैक्स कब भरना पड़ेगा? तो 2025 के थर्ड मंथ, मतलब मार्च के 15th। तो 15th मार्च ऑफ 2025 तक उसको पे करना पड़ेगा। पे नहीं, मतलब फाइल करना पड़ेगा टैक्स रिटर्न। It has a limited liability feature of a C corporation. Similarly, like C corporation में जैसे हमने देखा कि जो भी बिजनेस की लायबिलिटीज होती है वो बिजनेस तक ही रहती है, वो ओनर्स तक नहीं जाती है। तो अगर लायबिलिटीज अगर बढ़ गई और उसको बिजनेस पे नहीं कर पाया, तो वो बिजनेस तक ही रहेगी, वो इंडिविजुअल तक नहीं जाएगी। सेम उसी तरीके से एस कॉर्पोरेशन भी एक क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी फीचर है उसके पास, राइट? सो अगर देखा जाए तो एस कॉर्पोरेशन के पास दो बेनिफिट है। एक तो खुद से टैक्स नहीं भरना पड़ता, और दूसरा है कि उसकी लायबिलिटी भी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। सो अब हम लाइक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि जो भी एंटिटी टाइप्स अब तक हमने पढ़े उसमें से हम दो कर सकते हैं। एक था डबल टैक्सेशन और दूसरा था पास थ्रू। डबल टैक्सेशन में कौन फॉल होगा? तो सी कॉर्पोरेशन फॉल होगा। पास थ्रू के अंदर एस कॉर्पोरेशन और क्या आएगा? पार्टनरशिप। तो income is taxed only once, like similar to S corporation, whatever the income earned by the partnership is going to pass through to the partners, and partners will report that income, and partners are going to be taxed. Okay, so this is how income is taxed only once. अगेन जैसे कि एस कॉर्पोरेशन में हमने देखा है कि भाई स्केड्यूल K1 था जिसके अंदर उसका शेयर रिपोर्ट होता था। सिमिलरली पार्टनरशिप के अंदर भी स्केड्यूल K1 होगा जिसके अंदर पार्टनरशिप की जो भी इनकम होगी वो सारी स्केड्यूल K1 के अंदर रिपोर्ट होगी, एंड स्केड्यूल K1 इज गोइंग टू बी रिपोर्टेड ऑन 1040 एंड देन इट विल पे द टैक्स। ओके, जैसे कि एस कॉर्पोरेशन में हमने देखा कि फॉर्म 1120 एस यूज होता है। सिमिलरली इन द पार्टनरशिप वी हैव द फॉर्म 1065। फॉर्म 1065 में जो भी इनकम अर्नड बाय द पार्टनरशिप होगी वो सारी रिपोर्ट होगी, राइट? द टैक्स रिटर्न इज ड्यू ऑन द 15th डे ऑफ फॉर थर्ड मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर।
मतलब कि similar to S corporation. So like in the S corporation we have to file the taxes before the 15th of March of the next year. सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 टैक्स ईयर है तो उसका टैक्स रिटर्न जो है वो 15 मार्च ऑफ 2025 फाइल हो जाना चाहिए. नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स. There can be a any number of partners like more than 100, right? Any entity which is not classified as a other type and having two or more members is a default considered as a partnership for tax purpose. मतलब कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर सिंगल ओनर है और कोई और एंटिटी टाइप नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सी कॉर्पोरेशन. अगर दो से ज्यादा मेंबर है, दो और दो से ज्यादा मेंबर है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा. ओके. इफ ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर टू कवर द पार्टनरशिप लायबिलिटी देन इट इज कॉल्ड द जनरल पार्टनरशिप. अच्छा, जैसे अर्लियर मैंने एक्सप्लेन किया कि पार्टनरशिप में हमारे पास थ्री टाइप्स है: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है कि जो भी लायबिलिटी होती है वो सारे मेंबर्स में इक्वली स्प्रेड हो जाती है, राइट? वो सारे के सारे मेंबर्स ऑपरेशन के अंदर फुल्ली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक उनके पास वो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन पे. तो वो जनरल पार्टनरशिप होती है. तो जनरल पार्टनरशिप मीन्स कि all the partners are personally liable to the business liability and all the partners can like directly work into the operations of the partnership firm. Okay, so this is called the general partnership. Next we have the limited partnership. So sometimes it happens that there is a partnership in which the few people don't want to get into the operations and they just want to sit and get their amount of profit, right? So उसके लिए क्या होता है लिमिटेड पार्टनरशिप की, कुछ पार्टनर्स होते हैं जिसको जस्ट उसका जो भी शेयर होगा वो मिल जाएगा बट वो ऑपरेशंस के अंदर नहीं आएगा. तो उससे क्या होता है कि दोनों चीज़ होती है. एक तो जनरल पार्टनर्स भी होते हैं जो ऑपरेशन हैंडल करेंगे, उसके लिए उनको सर्टेन अमाउंट्स ऑफ सैलरी भी मिलेगी. और दूसरे होते हैं लिमिटेड पार्टनर्स जिसको जस्ट वो इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट इन द पार्टनरशिप एंड दे विल गेट देयर अमाउंट ऑफ शेयर. Created to allow a limited liability feature of corporation while retaining the single form of taxation. Okay. सो सिमिलरली लाइक लिमिटेड लायबिलिटी फीचर है उसके पास कॉरपोरेशन का और उनको जस्ट सिंगल फॉर्म ही रखना है टैक्सेशन का. तो उसके लिए वो लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, कि भाई टैक्स रिटर्न भी एक बार फाइल करना पड़ेगा. आई मीन कि टैक्स भी एक बार पे करना पड़ेगा और उसके पास लिमिटेड लायबिलिटी फीचर भी रहेगा, राइट? Next, at least one partner is limited partner and one partner is general partner. So in case of limited partnership, at least one partner is limited partner and one partner is a general partner. Limited partners are not allowed to participate in the operations. As I mentioned earlier, कि भाई जो भी लिमिटेड पार्टनर होगा जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पार्टनरशिप की, राइट, ऑपरेशन हैंडल करने की, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट इन्वेस्ट करेगा उसके जो भी कैपिटल होगी वो, और उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, प्रॉफिट का शेयर लेगा. वो ऑपरेशंस नहीं देखेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देखेगा. ओके. जनरल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स are and are personally liable for any partnership liability. ओके. सो यूएसए के अंदर एक और टाइप होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स. तो जो भी पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसके लिए एक अलग से टैक्स होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स, विच वी आर गोइंग टू लर्न डीप इन दी अपकमिंग सेशंस. ओके. सो अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि जो भी जनरल पार्टनर्स हो गए उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरना पड़ेगा. बट जो भी लिमिटेड पार्टनर्स हो गए वो ना तो उनको कोई टैक्स पे करना है, ना ही उनको कोई लायबिलिटी बेयर करनी है. ओके. सो दिस इज लिमिटेड पार्टनरशिप. Next, we have the limited liability partnership.
तो ये मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक सीपीएज होते हैं, लॉ फर्म्स होती है, राइट, जो भी स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब क्या बनाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इससे क्या होता है, so the main difference between the limited partnership and limited liability partnership is that all the partners in the LLP, that is liability partnership, can actively participate in the operations. अभी हमने जस्ट देखा कि भाई जो भी लिमिटेड पार्टनरशिप होगी उसमें जो भी पार्टनर्स होंगे जो लिमिटेड है वो ऑपरेशंस में नहीं आ सकते, बराबर। बट अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की है एलएलपी, सो उसके अंदर बेनिफिट ये होगा कि ऑल द पार्टनर्स कैन वर्क एंड इन पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशंस, एंड सिमिलरली दे कैन मेंटेन देयर लिमिटेड लायबिलिटीज फीचर। सो एलएलपी का बेनिफिट ये होगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और आपको लायबिलिटी पर्सनली पे भी नहीं करनी पड़ेगी। So this was a limited liability partnership. Next is limited liability company. तो अब तक हमने जो भी देखा वो थे कॉर्पोरेशंस, राइट, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन एंड अदर वाज पार्टनरशिप। अभी दोनों को अगर मिक्स कर दे तो वो क्या बन जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो hybrid structure that combines the limited liability of corporation with the tax advantage of general partnership। मतलब कि उसको टैक्स रिटर्न्स भी एक ही बार फाइल करना पड़ेगा और उसको लिमिटेड लायबिलिटी का भी फीचर मिल जाएगा। सो दिस इज जस्ट द हाइब्रिड ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द पार्टनरशिप। ओके, if two or more members, it is classified as a partnership and files form 1065। अगर दो से ज्यादा मेंबर्स है तो वैसे भी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी और उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 1065। अगर सिंगल मेंबर है तो सिंगल मेंबर है तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, डिसरिगार्डेड एंटिटी इन द यूएसए। ओके, सो इफ देयर इज अ सिंगल मेंबर इट इज क्लासिफाइड एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी, और जो भी इनकम होगी वो कहाँ पे रिपोर्ट होगी, तो कैपिटल स्केड्यूल से ऊपर। Okay. Next, further it can elect to be classified as a S corporation by filing form 2553 and C corporation by filing form 8832। अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है और आपको होता है कि भाई फॉर द टैक्स प्लानिंग पर्पस आई वांट टू मूव टू एस कॉर्पोरेशन, then you have to file form 2553, or if you want to move to the C corporation then you have to file the form 8832। No restriction on number or types of members। Okay, there can be anyone can be a member and any number of shareholders can be a member। So thank you so much. This was all about the types of entity. Again, in the upcoming videos, we are going to learn each and every entity in detail, and I am going to show you practically how the tax returns are going to be prepared। So तब तक के लिए that's it। Thank you so much for taking the time।